guys, how are you all today and welcome back to my channel Colors of Life with Soumya. Through this channel मैं हर हफ्ते आपके लिए न्यू एंड क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड आइडियाज लेकर आती हूँ. सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस. गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट जो हमने इससे पहले कभी भी इस चैनल में नहीं क्रिएट की है. So today we are going to paint on a mobile cover. Yes guys, ये मोबाइल कवर मेरे फ़ोन का है and this is quite old. बहुत ही मैंने इसको यूज़ किया है, काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ किया है और ये काफ़ी गंदा हो गया है and it's not looking nice nowadays. So let me give you a close look of the cover. So what I have thought is that I am going to paint on this particular mobile cover and I will try to give it a new makeover. Let's see how it goes. सबसे पहले मैंने इस कवर को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर ली है. नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड व्हाट टू पेंट ऑन दिस कवर. सो आई थॉट दैट आई हैव नेवर मेड अ बोहो आर्ट इन दिस चैनल. सो इस बार ऐसा करते हैं कि इस कवर के ऊपर कुछ बोहो पेंट करते हैं. ओके, सो इस कवर पर मैं कोई पेंसिल स्केचिंग नहीं करूँगी. आई विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द बैकग्राउंड कलर. और बैकग्राउंड कलर के लिए मैं ऑरेंज, येलो और वाइट मिक्स करके एक बेस कोट बना लूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन टू दिस कलर मैं थोड़ा और ज़्यादा करके वाइट यूज़ करूँगी एंड आई विल मेक द सेकेंड कोट. सो वंस द सेकेंड कोट ऑफ द बैकग्राउंड कलर ड्राइज अप, उसके बाद आई विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द मेन एलिमेंट्स. ऑल्दो आज मैं एक बोहो आर्ट बनाऊंगी बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज़ क्वाइट सम पॉपअप कलर्स ताकि ये जो पेंटिंग है ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे. सो अब मैं बैकग्राउंड कलर के साथ थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज मिक्स करूँगी और एक राउंड शेप बना लूँगी. एंड वंस दिस राउंड शेप इज़ क्रिएटेड, अब उसके ऊपर मैं डिफरेंट कलर्स से पॉट्स बनाना स्टार्ट करूँगी. एंड देन आई विल गिव सम डिज़ाइंस टू दोज पॉट्स. एंड उसके बाद मैं प्लांट्स और लीव्स बनाऊँगी. Guys, nowadays boho art is very much in trend. People are liking this form of art a lot. और basically ये boho art होता क्या है? boho art में you will get to see कि lot of colors use किया जाता है and at the same time bold patterns use किया जाता है. Sometimes you will get to see a lot of geometric patterns like circles, rectangles, squares. Then there are some leaves, some plants, some pots. These kind of bold patterns are used in a bohemian art or a boho art. So यहाँ मैंने leaves भी पेंट करना स्टार्ट कर ली है. सो लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द ट्रेडिशनल green or yellow color. I'm going to use a lot of colors like blue, sky blue, turquoise blue, teal blue, and then of course I will use light green, dark green, and will use little bit shade of yellow so that it will give a very nice effect to this mobile cover. And of course we will not forget to highlight the leaves a little bit because बिना highlighting के तो painting में जान ही नहीं आता है. So it's very important कि हम थोड़ा सा light and shadow create करें, थोड़ा सा highlight दे. Although यहाँ पे मैं light and shadow तो create करूँगी नहीं, but मैं थोड़ा सा leaves में highlighting दूँगी.
And finally, I'll apply a coat of varnish and our painting is done. I wish you guys liked my video, and if you do so, then please do not forget to like, share and subscribe the channel, and also hit the bell icon for future notifications. Till then, it's time to say goodbye until we meet again in our next video. Hasta la vista.